माइकलएंजेलो थे. माइकलएंजेलो वाज अ वेरी वंडरफुल एंड वेल नोन स्कल्प्टर. वो स्टैच्यूज बनाते थे. तो माइकलएंजेलो से किसी ने पूछा, इतना सुंदर स्टैच्यू एक ऑर्डिनरी पत्थर से आप कैसे बनाते हो? हाउ इज इट यू मेक ब्यूटीफुल स्टैच्यूज आउट ऑफ एन ऑर्डिनरी स्टोन? You know the answer of Michelangelo? Michelangelo ने ये कहा था, the statue is already there. Statue पत्थर के अंदर already है. मैंने unwanted चीजों को चिसल करके निकाला, तो उस पत्थर से statue निकल के आ गया. Good evening, everyone. Welcome to the Inspired Talk with Shri Prakash D, IPS, Additional DGP, Uttar Pradesh Police. RAYACADEMY is a socially committed, mission-driven educational organization with its mission of producing 100 civil servants, Inspire 100, in 5 years time period, aiming to develop a breed of new administrative leaders in Odisha who could act as a change agents for transforming our Odisha state in social, economic, and public administration fronts. RAYACADEMY has been founded with a vision to make high-quality professional education and training available at doorstep with the guidance and assistance of nationally acclaimed trainers and mentors who have achieved a benchmark in their fields by consistent success records. With a goal to extend the benefits of civil service exam training to pan-India, we have a dedicated mission for our state, Odisha. So in this pursuit, I'm excited to share that all 9 students from RAYACADEMY have qualified for Odisha Civil Service Examination, of which the result was announced yesterday. So may I now take the privilege to welcome our chief guest, respected Sir Shri Prakash D, IPS. Sir is an exceptional officer and is currently the Additional Director General of Police in Uttar Pradesh. He is also the CMD of Police Avas Nigam, Uttar Pradesh. He served as an Inspector General of Police, CRPF in Chhattisgarh and Northeast India. Prior to that, he was also the SP and the Civilian Police Officer at United Nations Peacekeeping Force. He has been contributing to the society since a long time, and we are fortunate to have him as our chief guest today. May I now welcome Shri Shankar Ray, founder of RAYACADEMY. He is an experienced, accomplished professional with a demonstrated history of working in the education industry. Envisioning towards progressive nation building, he has been a guiding light for many civil service aspirants. So before we start our event, I would like to share with you that please do mute your mic throughout the event. We have a dedicated question and answer round where you can ask questions to Prakash sir directly. In the meantime, please post your questions in the chat box below. We will take up these questions during the question answer round. May I now invite Shri Shankar Ray to deliver the welcome address. Thank you so much. Respected Shri Prakash D sir, I'm very fortunate and I feel very humble and honored that sir you accepted our invitation to interact with aspirants all over the Odisha who are in pursuit for the civil services examination. And sir, I'm very also glad to share that all of these aspirants whosoever have joined today, recently there is a change happened in the Odisha Public Service Commission, Odisha Civil Services exam, where the pattern and the syllabus is also in line with the UPSC. So that is also going to benefit the students equally preparing for both the central civil service, that is UPSC, as well as Odisha Civil Services exam. All of the aspirants, sir is here today to share on the topic of career in civil services. At the same time, with a long span of experience which sir holds, I'm sure that all of you aspirants will be immensely benefited with the direction and the light which sir is going to provide us today. And I'm really excited that this session will be going to be much more beneficial to you as well as and in the future whoever is going to watch this video. And with I completely understand that all of you are waiting for
sir. So without wasting any time, may I kindly request Shri Prakash sir to kindly address the students. Good evening to all of you, Mr. Shankar Ray and all the participants. I am glad to be with you today, and to talk to young aspirants is always a joy to me and to all of us. The topic which we have chosen today is career in civil services. Before I start, I would like to congratulate the Shankar Ray Academy and all the candidates who have cleared the Odisha Public Service Commission. I hope and pray that you serve the state, the country, and the society in honor and as expected of a civil servant. We will have a dual language communication, number one. Number two, as mentioned by the lady, if you have any questions, put it in the chat box and we have a separate session for clearing your doubts. Before I start, I would say a few disclaimers. मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, just because मैंने ये एग्जाम पास कर लिया है, I am an IPS officer of UP cadre, please don't think that whatever I say is the ultimate truth, number one. Number two, whatever anyone says, take it in the right spirit, number one, and judge the advice or the piece of information which anyone gives, whether it suits you or not. This is not a tailor-made program for all the candidates. All of us prepare for such exams. I hope and pray that all of us come out successfully. But I would also request you to have a plan B. जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, all of us, we hope that we succeed. Succeed करना भी चाहिए with all the hard work and with the blessings of your parents and God. I hope you succeed. But एक plan B हमेशा तैयार रखिएगा. हमेशा एक plan B तैयार रखिएगा. If not this, then what next? Because very unfortunate events have happened. You might have read in the media, you might have come across some people who could not clear the exams after so much of hard work, after so many years of preparation. And then at the age of 28, 30, 32, 34, the future is a question mark to them. So always have a plan B. Like at the very beginning, the plan A was computer, the plan B is a mobile. So now I'm holding my mobile in my hand and we are having plan B in front of us. So हमेशा एक plan B अपने तैयार रखिएगा. Plan A succeed होना चाहिए, नहीं है तो plan B. See, civil services is a prestigious service in our country. We are a developing country, third world country, and everyone wants to be a part of the civil service. Why? Because as the word says, it is a service. ये एक सेवा है. State, I was saying that it is very vast, very wide, especially in a country like India. आप किसी भी sphere of life में देखिएगा, there is a government there. It might be the state government, any one of the departments. It might be the central government, any one of the departments. So the role of the state is very wide, very vast. You cannot run away from the role of the state, especially in a third world country like India. If someone wants to serve the society, you have umpteen number of opportunities in a state like Odisha or across the country, any state for that matter, and in a country like India. And you will feel proud and happy to serve the society in whatever capacity. Like you are the health secretary of the state. Imagine the role of the health secretary during Corona times. It's quite vast, quite huge. You are the superintendent of police of a district. We have had many cyclones in a state like Odisha.
Imagine the role of a police officer, the district collector, or the state disaster relief force. People wait for succor, people wait for help from the state. Where everybody fails, the state comes into the picture. Again and again, I am stating the quote of the example of Odisha, because Odisha has come up very well in many of the social indices. In a social index like sports, see the number of facilities which have come up in your state. जब मैं छत्तीसगढ़ में था, I was posted as IGP CRPF Chhattisgarh. I was heading the anti-Naxal force. Odisha has a common border with Chhattisgarh. Many times I've visited Odisha, especially the states like Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand. They all have come up very well. So what I mean to say is, you cannot deny the role of the state. तो यदि कोई कहता है साहब प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बहुत मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मैं मना नहीं करता हूँ. Your own classmates, your own batchmates, if they enter a multinational company, they may go abroad twice in a month. They may earn maybe 4 times in comparison to your salary in the state. But again, I would say, imagine the role played by the state government, any of the department. So civil services has got a very important role in a country like India, a developing country, where you have a lot of achievements to do. Civil services, you can divide it mainly into 3 headings: All India Service, the Central Services, and the State Service. All India Service, as per the Constitution, initially there were 2 services: Indian Administrative Service (IAS) and the Indian Police Service (IPS). और बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा भी बाद में जोड़ के जो अखिल भारतीय सेवा 3 माना जाता है, इन IAS, IPS and IFS. And then you have the central services, the railways, the revenues, the income tax, so many central services, and then the state services. Like in the beginning, Vishakaji was mentioning that candidates have been selected in the state civil service. So civil service, we have seen the role and how they came up into existence, especially in a country like India, and the Indian All India Services, the central services, and the state service. Who selects them? I'm just mentioning it in a go because all of us are familiar with this. The Union Public Service Commission, which is a constitutional body, has been entrusted with the responsibility of selecting candidates for the UPSC civil service exams, CSE. Every year it is being conducted in 3 stages, all of us know. And then you have the state public service commissions in all the states. Now, every year, हर साल लगभग 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं इन एग्जाम में, 1000 करीब सेलेक्ट होते हैं इन ऑल द सर्विसेज. एंड IAS, IPS में यदि आप देखेंगे तो लगभग 200 to 250. So what is special in them? If somebody is selected out of these 10 lakhs, so what is special in them? Why can't I be that somebody who is selected in the final exam? Who is selected in the final exam? What should I do? What should I do? Like as somebody has said, I'm sure you would have read, success is not an accident. Accidents बहुत होते हैं. आज भी आते आते रास्ता में मैंने देखा था 2 गाड़ी बीच में लड़ गए. Accident. Both the fellows who were involved in that accident would not even thought, मैं कहीं जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी कहीं किसी से लड़ गई. This is an accident. But success is not an accident. तो प्लीज कोई गलतफहमी आपके मन में हो उसको हटा दीजिएगा. Success is, as somebody has said, 99% hard work and maybe 1% luck. If आप luck को मानते हो, भगवान को मानते हो, मानना भी चाहिए. 1% तो है,
but 99% is hard work. तो ये 10 लाख बच्चे जो अपीयर होते हैं, क्या आप ये मानते हैं 10 लाख में वही जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं लोगों ने हार्ड वर्क किया होगा, बाकी लोगों ने नहीं किया होगा? सभी लोगों ने किया होगा. All of them would have worked hard. So what made them to succeed and the others were not that fortunate to succeed? When you work hard, it has to be intelligent. It has to be an intelligent hard work. So first, you understand the pattern of this exam, and then you have a goal. Especially, I'm addressing my young brothers and sisters who are hooked up in this webinar. Understand the system. Have a target, have a goal, then work towards it. मेरे ग्रैंडमदर नानी बोलती थी, बाजार जब जाते हो आप लिस्ट बनाइए पहले बैठ के, क्या सामान लेने के लिए जा रहे हो. So make a list of what you want to buy. Then she would always say, आपके जेब में कितने पैसा है वो भी देख लेना. Because आपके पास 1000 है और 2000 के सामान खरीद लिए and you are not able to pay, तो दुकानदार आपको गाली देगा, बेटा पहले देखना चाहिए था ना पैसा कितने हैं आपके पास. Because we are in very many stages. Somebody would have just passed out of 12th out of you. Somebody would have finished your graduation. Somebody would have finished your post-graduation. Somebody might be an art student. Someone may be an engineering student. Somebody might have already appeared in this exam once, twice. So, आप अपना target बनाइए 2022 October 8th. My target would be 2024 or 23. I will be selected in this. So have a target and then you work towards that target. वैसे ही आज Mr. Vinay Singh और अमित जी दोनों, अच्छा, I think you are mute. Okay, no issues. मैं बाद में पूछूंगा when we interact. So the question pattern or the exam pattern, the first difference, this is not a college exam. हम लोग we are used to college exam. College exam कैसे होता है? 100% marks में whoever has got 50 pass. Above 50 सभी लोग pass है. Someone who has got 51 or someone who has got 81 or 96, for the matter of pass fail, they are equal. They are equal. But in a competitive exam वो नहीं है. तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसमें पास फेल है ही नहीं. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. 10 लाख बच्चों में से कितने लोगों को पीछे करके आप आगे बढ़ के आओगे, दैट मैटर्स. सो आउट ऑफ द 10 lakhs एवरीबडी इज अ कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों इसको कहा गया है? इसलिए कहा गया है, everyone, every boy or a girl, every candidate is your competitor. So your target should be, मैं इनमें से 10 लाख में से 9 लाख 9,999 लोगों को मैं पीछा करके मैं आ गया होगा. Then only you can come up. Number one. So this is not a college exam. Pass or fail है ही नहीं. Second thing, there are 3 stages: the preliminary, the mains, and the interview, which is the correct word is personality test. Preliminary है, mains है, personality test. Preliminary के लिए it needs a different type of preparation. Mains के लिए it needs a different type of preparation, and of course you would agree with me saying that your personality test is the time when you interact face to face with the board. उसके लिए एक अलग preparation होता है. I'm sure your academy, your mentors, people who are there to guide you, they will be more elaborate because this is just one single session of an hour or so. तो preliminary में आप क्या करेंगे? Preliminary is just like a gate pass. हम लोग आम भाषा में gate pass बोलते हैं. Gate pass हो तब आपको gate में अंदर आने के लिए कोई allow करेगा. Preliminary में there is no marking, there is no ranking. Sorry, not marking, there's no ranking. Preliminary में. So preliminary, your aim is to clear the prelims.
And before that, I would again request all of you go through the question papers. आपके पास past question papers academy में होंगे. It's available in the market. It is there on internet. If you go through the question papers of the last maybe 5 years, 6 years, then you will understand the range of subjects which is covered in preliminary. There is no fixed syllabus. हम कॉलेज में जो होते हैं ना, खड़े होके बोलते हैं सर ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, इसको बदलवा देना क्वेश्चन को. तो कभी कभी प्रोफेसर बदल भी देता है, बिकॉज ही विल आल्सो सी अरे हमने ये फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में ये पढ़ा ही नहीं, बट समहाउ दिस क्वेश्चन हैज कम अप. सो ही विल से नहीं, नो प्रॉब्लम, आउट ऑफ दिस 3 आप फर्स्ट को इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी में आप आंसर करिए. हियर देयर इज नो सिलेबस. ऑफ कोर्स syllabus is given, but they can ask anything under the sun. So any candidate should have a wide understanding of all the subjects which a normal graduate is supposed to know. आप पूछ सकते हैं सिलेबस ही नहीं है तो आप मैं कैसे तैयार कराऊं? A normal candidate, a graduate of an Indian university के पास जितने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, that is expected. Number 1. Number 2, ये भी आप समझ लीजिएगा 10 लाख में से उनको 10,000 सेलेक्ट करना है. सो इट इज बेसिकली एलिमिनेशन. वो कोशिश करते हैं जितने कम से कम सेलेक्ट हो जाए फॉर मेंस. सो द क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट. आप क्वेश्चन पेपर्स को एक बार पढ़िएगा. दोस हु ऑलरेडी appeared in the exams, I am sure you'll agree with me, question is not direct. Out of 120, maybe 20 to 25 questions are direct, the others are very twisted. Because they want to test your understanding of the subject, not just mugging up. The third is, preliminary में आप देखिएगा, it is multiple choice questions. Maybe जब पहले तैयार कर रहा था, I was under the impression, अरे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर्स भी आपके सामने है, फिर क्या दिक्कत है? I can just pick out the answers, I can choose the answers. No, I was wrong. If somebody is under that impression, please change your idea, because A, B, C, D जो 4 options है, एक option तो आराम से आप हटा सकते हैं. Just by reading it, if you are prepared, you will know A, B, C, D में one option is wrong. थोड़ा बहुत thinking करके, eliminate करके, you can choose, you can tick off one more. एक और option आप हटा सकते हैं. लेकिन बाकी 2 options में से, it will need a lot of thinking and it will need a lot of understanding of the subject which you have already studied. So questions भी आपके सामने हैं, answers भी आपके सामने हैं, but if you have deep knowledge of the subject, then only you can pick the correct answer. And remember, they also have negative marking. This is not just to make you afraid, but just to make you alert. Negative marking भी है. तो जैसे बोला जाता है ना साहब, मैं आंख बंद करके ABCD टिक करके आ गया. No, that won't help you. So preliminary में read a lot, be open to what is happening around you in the society. मैं पूछना चाह रहा था, today is October 8th. So October 8th is Air Force Day. The moment you open the newspaper, उसमें मोटा लिखा है आज वायुसेना दिवस. So since today is October 8th, in case if the exam is on October 8th or you are appearing in front of the board on October 8th, I am sure something will be asked about Air Force and the contribution of Odisha in Air Force, if you are from Odisha. So a wide reading, understanding is necessary for prelims. This is what I want to say. और prelims के बारे में एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, especially for beginners, those who are starting from scratch. आप ऐसे कर सकते हैं, 4 साल का क्वेश्चंस निकालिए, 120 क्वेश्चंस, उसको आप सब्जेक्ट में बांटिए, divide them into subjects. Like out of 120, 10 or 15 may be from freedom struggle, 15 may be from Indian polity, 10 may be from geography, 5 may be from current affairs,
another 5 maybe from geography. Geography, it's already mentioned. Science and technology, sports. So 120 questions को आप पहले divide करके रखिएगा as per the subjects which you understand. I'm sure there will be minimum of 20 to 25 questions. किसी भी category में नहीं होंगे. They will be under miscellaneous. तो miscellaneous में आप बाकी questions को रखिएगा out of 120 में. Then what you do is you attempt the question paper without looking into the answer key. Answer key दे के बिना आप इन questions को attempt करिए. You can do it yourself. Just be true to yourself. 120 questions को watch में और या mobile में stop watch set करके आप बैठ के answer करिए. In exam situation, nobody should disturb you. आप 2 घंटे में बैठ के उसको correct answers choose करिए, darken करिए. Once the prescribed time is over, then pick up the answer key. उसी book में पीछे की तरफ answer key भी दिया हुआ है. और if your academy is there, your mentor can also help you. If your academy is not there, no issues. आप answer key को compare करके देखिए. You will know where you are. आप यूपीएससी स्टैंडर्ड के सापेक्ष, यूपीएससी के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट where are you will come to know. This is very simple. If you do it honestly under exam situation, environment, and without looking at the answer key. आप answer key बिल्कुल मत देखिए. Just pick up 2019 का prelims निकाल दीजिएगा. General studies, जो CSAT GS plus your subject. अब तो क्योंकि there have been many changes. In our time there used to be 2 subjects in mains. अब तो एक ही subject रह गया है mains में, and prelims में GS and CSAT. So आप 120 questions को answer करके देखिए. You will come to know यूपीएससी के standard में मैं कहां पर हूं. Out of 120, I've got 40, 45, 50, 55, 60, whatever it is. The second thing, मैंने क्यों कहा उसको subject में questions को divide करिए. You will know in which subject you are better and in which subject you have to work more. आप अपने आप को पहले assess करिए. जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को जानो. Know yourself. So how will I know myself? I will know myself when I answer the previous year's question papers under exam environment very honestly. तो मैं यदि हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन में से 6 का मेरा आंसर्स करेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 का 10 रॉन्ग है, गलत है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ एटलीस्ट आई विल नो दैट आई शुड इंप्रूव इन दीस एरियाज. सो प्रीलिम्स में प्लस एज दे से एटलीस्ट 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर. देखिए इंग्लिश व्हाटएवर सेड एंड डन, you must have a good command over the English language, both spoken and written. Mother tongue, मेरे mother tongue कुछ और है, जो official language कुछ और है. But as of now, the communication, the language of communication is English. So, to some extent, you have to have a good command control over English. Of course, your mother tongue is there, Hindi भी है. But आपको कम से कम ये पता चल जाएगा किन किन एरियाज में मैं वीक हूं, किन किन एरियाज में मुझे और मेहनत करके और शेप करना. इट इज देयर ऑलरेडी. माइकल एंजेलो वाज अ वेरी वंडरफुल एंड वेल नोन स्कल्प्टर. वो स्टैच्यूज बनाते थे. तो माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा, इतना सुंदर स्टैच्यू एक ऑर्डिनरी पत्थर से आप कैसे बनाते हो? हाउ इज इट यू मेक beautiful statues out of an ordinary stone? You know the answer of Michelangelo? Michelangelo ने ये कहा था, the statue is already there. Statue पत्थर के अंदर already है. मैंने unwanted चीजों को चिसल करके निकाला तो उस पत्थर से statue निकल के आ गया. आप सोचिए, just close your eyes and see. पत्थर already है, उसमें से sculptor क्या करता है? अपने weapons, अपने instruments से अनवांटेड चीजों को निकालता है. देन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैच्यू कम्स अप. लोग आके बोलते हैं, अरे वाह कितने सुंदर स्टैच्यू है.
सो अनवांटेड चीजों को हमें हटाना है, प्लस हमारा पर्सनालिटी को शेप अप करना है एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी इज द बॉडी विच कंडक्ट्स द एग्जाम फॉर द सेंटर सिविल सर्विस. सो उनके एक्सपेक्टेशन ये है मैं अपने आप को उस लेवल पे ऊपर लाऊं. दिस इज एक्सपेक्टेड. सो प्रीलिम्स में हैव दिस टाइप ऑफ अप्रोच. एनी सब्जेक्ट बी रेडी टू अंडरस्टैंड, टू रीड and also to remember. भगवान ने इतना सद्बुद्धि सबको दिया है. जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल स्टूडेंट हु हैज पास्ड आउट ऑफ कॉलेज, ग्रेजुएट, उनका जितना मेमोरी पर होना चाहिए उतना ही चाहिए. बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शकुंतला देवी जी पहले होती थी जो कंप्यूटर से लड़ती थी. कंप्यूटर से यूज्ड टू कंपेयर हर ब्रेन. शकुंतला देवी जी, यू वुड रिमेंबर, जो मैथमेटिक्स जीनियस, विजार्ड जो बोलते थे. ठीक है, if somebody is a wizard, well and good, but what the body expects is, the selection body, a normal individual who is matured enough to understand whatever is happening around him or her. So newspaper is a must, at least one national newspaper, one national magazine. जो national level की magazines होता है, magazines में अच्छा ये है, whatever has happened, they put it in front of you in a very concise form. जो पुराने I don't know, पुराने आप में से बहुत कम होंगे, मैं और शंकर रे साहब भी होंगे. द वर्ल्ड दिस वीक करके एक प्रोग्राम पहले आता था टीवी में, प्रणय राय साहब का जो दाढ़ी रखते थे, एनडीटीवी का जो शुरू में थे. द वर्ल्ड दिस वीक, एवरी फ्राइडे देयर वुड बी अ प्रोग्राम. मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं टीवी में न्यूज देखता था एंड द वर्ल्ड दिस वीक, बस दो ही देखता था, नथिंग एल्स. वर्ल्ड दिस वीक में he would give all the happenings, जो important happenings है past 1 week में. every Friday आता था वो program. World this week, Pranay Roy and his wife is Mrs. Radhika Rai. तो बहुत ही अच्छा आप समझ सकते हैं and remember कर सकते हैं if it is in a form of a picture. आपके सामने picture है, your brain registers it and you remember it a longer period. Then I would say prepare handwritten notes. देखिए हैंड रिटन नोट्स इसलिए है, हैंड रिटन नोट्स एक बार जब आप लिखेंगे ना, एक बार आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ब्रॉट टुडेज न्यूज़पेपर आल्सो. आई हैव जस्ट मार्क्ड अ फ्यू दिस थिंग. दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ एडिशन, जस्ट टू शो इट टू यू आई ब्रॉट इट. तो उसमें एक न्यूज आइटम आया है, सक्सेसर टू जस्टिस यू ललित. सो सक्सेसर टू जस्टिस यू ललित साहब का इसमें पेपर में लिखा है. So immediately your brain should connect. Supreme Court में कितने judges है? Who is the present Chief Justice? Who is the next in line? Do they select the senior most every time? You have Google with you, you have books with you, you have your academy, you have your mentor. I was referring to Google. It says three times, 3 बार इस सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है. 3 times वायलेट किया गया है and it is there in history. It is there in history. So when you read about the successor to Justice U Lalit, you can very well remember these facts. कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में and how a successor is selected, and if the principle of seniority has been violated before any time in the history. तो ये आपको, जैसे गूगल में लिखा है, once it was breached in 1964 when somebody was selected who was not number 1 in the seniority list because the number 1 was seriously unwell. He was sick. वो बीमार थे, इसलिए नंबर 2 को चूज किया गया as Chief Justice. Second time, very important, you will also read it in Indian history, then polity. Mrs. Gandhi जब Mrs. Indira Gandhi जब Prime Minister थी 1973 में, it also, this incident also gave birth to many controversies. Justice A.N. Ray was appointed as the Chief Justice of India on April 25th, 1973 by superseding 3 senior most judges.
वो एक इंपॉर्टेंट केस था, केशवानंद भारती केस। उसका जजमेंट जिस दिन आया था उस दिन 3 सीनियर लोगों को दरकिनार करके नंबर 4 में थे उनको बना दिया गया। देन द कस्टम ऑफ selecting the senior most was also sidesteps violated for a third time in 1977. This is just in Google. Why I am saying this? मैं जब पढ़ रहा था जस्टिस यू ललित साहब का सक्सेसर का नाम ढूंढ रहे हैं, तो इमीडिएटली आई वांटेड टू नो क्या इससे पहले ये वायलेट हुआ है ये सीनियरिटी प्रिंसिपल। तो इट इज देयर इन गूगल और एनी ऑफ द बुक्स। सो कनेक्टेड चीजों को एक बार आप देख के अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, एक बार आप लिखते भी है, योर ब्रेन रजिस्टर्स वेरी इजीली handwritten notes. Like 5 minutes back I said today is Indian Air Force Day. तो Indian Air Force Day में आपको क्या करना है, ऑल नेशनल इंपॉर्टेंट डेज का एक लिस्ट बना के अपने दीवार पे चस्पा कर देना, सो दैट व्हेनेवर यू सी दैट लिस्ट यू विल नो जनवरी से दिसंबर तक जितने इंपॉर्टेंट नेशनल डेज है, नॉट एवरी डे, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज, सेम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज को एक लिस्ट बना के अपने दीवार पे चस्पा कर देना। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। नाउ यू हैव कंप्यूटर्स, यू हैव मोबाइल फोन्स, सो व्हेनेवर यू सी द लिस्ट यू विल रिमेंबर, ओहो अक्टूबर 8 इंडियन एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे बोलने के तुरंत इट शुड स्ट्राइक इन योर माइंड कितने कमांड है एयरफोर्स में, 5 कमांड है, कहां पर है, सदर्न एयर कमांड कहां है, वेस्टर्न एयर कमांड कहां है, नॉर्दर्न एयर कमांड कहां है, ईस्टर्न एयर कमांड कहां है। So if you connect like this, it is very easy to remember, it is very easy to study. This is what I want to say about prelims. So prelims we have already discussed. The next would be mains. Mains में आप देखिएगा, this is entirely an exam which tests your understanding and your logical thinking. आपका सब्जेक्ट में कितने ग्रिप है, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। आपका लॉजिकल थिंकिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ओपन डिफेकेशन फ्री, ओडीएफ बोलते हैं, ओपन डिफेकेशन फ्री, खुले में शौच नहीं करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, द एंटायर कंट्री शुड बी ओपन डिफेकेशन फ्री। उसके लिए क्या क्या कदम उठाया गया है, क्या वेदर इट इज इफेक्टिव, और इफ यू बिकेम ए कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आप क्या इसमें और ऐड करेंगे, सो दैट आपके विलेज, योर सिटी, योर डिस्ट्रिक्ट, योर स्टेट एंड फाइनली द कंट्री बिकम्स ओपन डिफिकेशन फ्री। फॉर एग्जाम्पल, जितने जो विलेजेस में टॉयलेट है उसमें शुरू में लाइट नहीं होता था, लाइट, तो पीपल वर हेसिटेंट टू गो देयर। अंधेरा में कौन जाएगा, अंदर जो है पता नहीं कोई कीड़ा है, कोई है, स्पेशली लेडीज। इन आवर कंट्री आपने देखा होगा, men folk they can go to the toilet at any time of the day. I'm being very frank. The ladies, they will only, especially the village ladies, they will choose only after it is dark, ताकि कोई ना देखे, आराम से शौच करके आए। तो बहुत सारे टॉयलेट्स बन गया था विलेजेस में, बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। So somebody came out with the idea, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यदि आप मेन सप्लाई लाइन से लेंगे, इतने लंबा सा है, सिंगल रूम टॉयलेट है, गांव में कोने पे है या घर के पीछे है, तो कैसे करेंगे? सो सम यंग ऑफिसर केम आउट विद द आइडिया सोलर पैनल। इट वर्कड वेरी वेल। एक छोटा सा टॉयलेट है, इसके ऊपर सोलर पैनल, डे टाइम में सोलर फोटोवोल्टिक सेल रिचार्ज हो जाता है, नाइट में बल्ब अंदर जाता है। So the toilet, the utility of the toilet became increased. ODF. So इस टाइप के आपके जो current problems facing our country, economy है, polity है, like recently we had the presidential election. तो presidential election कैसे होता है? तो ये सारे चीज की deep understanding होना चाहिए mains में, because mains में it is a question answer pattern. You have of course the CSAT, you have an essay paper, you have language, your mother tongue, and one Indian language which you choose. English है, one Indian language, it can be Hindi or any language. This is basically a pass mark test. But आपके जो
subject है, there are 2 papers. So उसमें they understand, they try to check your understanding of the subject and your deep knowledge and how you come out with new ideas. And those ideas should be practical. Jesse, I just gave the example of a village toilet being electrified by solar photovoltaic cell. Even in Odisha, I have my batchmates there. All your police stations have solar energy. Odisha में आप देखिएगा police stations सभी में solar energy है. So you are not dependent on the main electricity network. Even if it fails, your work keeps on going. तो इस टाइप की जो innovative ideas, how you understand and how you come out with new ideas. तो ये आपकी mains का है. तो mains में you must have a separate strategy, not like prelims. And good writing practice. Here, I'm sure your mentors, your academy, your teachers, or even your friends, or those who already cleared, they can help you. Like I'm sharing my experience, what I used to do. मैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स निकाल के आंसर्स लिख के मेरे ही एक सीनियर थे उनके पास में ले जाता था. He used to correct it. He may not be corrected as per the expectation of UPSC, but at least I would know where I am, where I have to improve. किन areas में मुझे improve करना है. Like somebody will have very good handwriting. Somebody may not have very good handwriting. So what will you do? तो आप topic से उसको capital में लिखिए. Capital में लिखिए topic से. Topics को underline करिए. Use some other ink color. There are many tricks where you have a good presentation. Imagine आप 1 साल तैयारी करते हैं इस एग्जाम के लिए, 2 साल तैयारी करते हैं और आपके जो आंसर शीट है, जो वैल्यू करता है एग्जामिनर, उसके सामने आप नहीं होंगे. वो आपसे पूछेंगे नहीं, अरे ये नंबर 3 में जो लाइन में आपने काटा है या लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं. He is not there to ask you, neither he will ask you. So your 2 years of hard work, your 1 year of hard work, your understanding of the subject, you have to present on the answer sheet. It is basically a dialogue between the candidate and the examiner through the answer sheet. You are not there in front of him or her. Examiner के सामने आप होंगे नहीं. It is only your paper which is there. So your answer should be complete. So writing practice जितने mains में होना चाहिए उतना अच्छा है. Maximum writing practice. You have test papers, you have previous papers, you have your academy, you have your mentors, you have your seniors to help you, to guide you. Usme bhi I would recommend you have a wide reading practice. जैसे न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल को कम से कम देखने का एक आदत रखिएगा. एडिटोरियल को यदि आप देखेंगे, I just marked a few these things. Like it says Nobel Peace Prize today. The Times of India, the first page says about amid Ukraine war, Peace Nobel awarded to rights champions. So the moment you see this, Nobel के बारे में सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए. It is there available in a book or even in Google, and peace especially. And somebody has already, an Indian has got the Nobel Peace Prize. वो कौन थे? कब मदर टेरेसा को कब नोबेल पीस प्राइज मिला था? इससे पहले कैलाश सत्यार्थी जी. तो इस टाइप के आपके तुरंत it should come. The newspaper is full of advertisements, so it's basically a distraction. But हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. तो then just I'll have 1 more minute, क्योंकि आज जब शंकर रेज साहब ने कहा था we'll have to interact with young candidates. It says BH number plates. There is a new concept. BH, Bharat, number plate. Somebody who is having all India service, या transferable job, army है, navy है, air force है, Indian police है. तो उनका जो vehicle number plate है, उसका एक new system has been introduced. This is BH series number plates. तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. Another news it says, a mountain climber, snow tiger passes away. Colonel Premchand retired. So this is one more news. You can just mark yourself. ऐसे नहीं है जो मैंने मार्क किया है वो ही सही है, मैं नहीं कहूँगा. But in any single day, on any single day, you will learn a minimum of 10 new things.
So this is what you must have. This approach you must have. Magazines may be same. And TV भी देखेंगे, ठीक है. Have some free time. See other programs also which relaxes you. But then, as we discussed in the beginning, remember your target always. मेरे target क्या है? मेरे target जो है time waste करने का नहीं है. मेरे target माँ बाप का पैसा का वेस्ट करने का नहीं है. मेरे टारगेट ये है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मैं एक क्लास 1 ऑफिसर बनूंगा, मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा. दिस इज माय टारगेट. सो उस सपना को साकार करने के लिए क्या क्या मुझे करना है वो करना चाहिए. सो मेंस हो गया. द थर्ड इज योर इंटरव्यू. द एग्जैक्ट वर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट. दिस इज द फर्स्ट चांस, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू इंटरैक्ट विद द बोर्ड. आमने सामने होंगे बोर्ड के. जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना, बहुत ही एकदम नया कपड़ा खरीद लिया, एकदम गोरे चिट्टे. नॉट ऑल सिविल सर्वेंट्स आर लाइक दैट. You be on as your own, because you can't change your personality overnight. But in this 1 year or in this 1.5 years, 2 years of time, your personality will be mature. आप अपने personality को जहां your physical personality, your mental thinking, your speaking skills, because you are expected to be a good communicator in any government job. Even otherwise, life may be. You have to be a good communicator. How will you become a good communicator? You can stand in front of a mirror and then say something and see. Like in an academy, I'm sure they give you mock interviews. Mock interview is very useful. कुछ लोग ऐसे आदत है, ऐसे करते रहते हैं, कुछ बटन को यूं करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं. So all these things you will not know. But in a mock interview, the camera catches all this. So when it is replayed on the screen, आपको खुद देख के बुरा लगेगा, अरे ये मैं ही था ऐसे कर रहा था पूरे इंटरव्यू में, ऐसे कर रहा था, दाहिने बाएं देख रहा था, I was not having eye contact. So personality test में it is the complete personality which is being tested, whether it is a male candidate or a female candidate. So I'm sure Academy will prepare you for that personality test, because as I said, this is the first time where you are having a straight face-to-face interaction with the board. And the board does not consist of ordinary persons. Indian Foreign Service, any foreign secretary retired, vice chancellor retired, chief secretary, even serving officers, they all are part of the board. तो आप उनको bluff नहीं कर सकते. I'm sure this is not the time for personality test briefing, but then just a few points which came to my mind. You can't bluff the board. If you know something, you say it. If you don't know, you can say sorry. If somebody is asking about Kalahandi में क्यों इतना poverty शुरू से रहा है, या why the schemes of the central government or the state government were not effective, कालाहांडी में ऐसे क्यों, तो you must have an answer. और एनिमल कंजर्वेशन, अभी वाइल्डलाइफ वीक भी हुआ था. So what are the animals which are seen only in Odisha? Like they will have your CV in front of them and they will ask you based on that. Not that they know who you are, they don't know who you are, but your background is known to them, so they will ask you that. If you plus your hobbies, like आप फोटोग्राफी आपके हॉबी है ही नहीं, आपने वहां जाके इंप्रेस करने के लिए बोल दिया हो फोटोग्राफी मेरे हॉबी है, वो बोलेंगे एसएलआर और डीएसएलआर के क्या फर्क है, क्या अंतर है बताओ, किस में फोटो अच्छा आएगा, या ऑर्डिनरी कैमरा या डिजिटल कैमरा में व्हाट इज द डिफरेंस, किस में अच्छा आएगा, देन यू विल बी कॉट देयर. So you can't bluff. This is what I meant to say. So the preparation for your personality test is entirely different. So we have seen the 3 stages. Prelims, उसका क्या preparation है, किस प्रकार का वो आपके environment होना चाहिए, किस प्रकार आप अपने आप को तैयार करेंगे. What about your mains? How will you prepare yourself? And what about your personality test? So these are the 3 stages in a civil service exam
conducted by UPSC. Most of the states, almost all the states, they have the same pattern for the state public service commissions also. State public service commission में भी यही pattern है. And if you prepare for one exam, it holds good for other exams also. Francis Bacon said, knowledge is power. Francis Bacon ने कहा है, knowledge is power. Today, anybody who is powerful will have good knowledge. पहले जमाना जैसे नहीं है, मेरे पास 100 घोड़ा है या मेरे पीछे 100 आदमी खड़ा है, मैं powerful हूँ. No. In today's world, it is only your knowledge. आपने इन्फोसिस का मूर्ति साहब का देखा होगा. मूर्ति साहब इन्फोसिस का जो चेयरमैन है, नाउ ही इज चेयरमैन एमेरिटस. TCS का आप देखिएगा, रामदुराई साहब का. There are so many. All these people have proved themselves only because of knowledge. And I'm sure my young brothers and sisters who are interacting with me in this session, you will prepare yourself in such a way that you come up out of the 10 lakhs. 10 lakh में से आप prelims cross करके, mains cross करके, then you come to the personality test interview level, and you also come out with flying colors. So I would just repeat what I said before. Success is not an accident. किसी ने succeed कर लिया, first rank में आ गए हैं या IAS बन गए, IPS बन गए. It is not an accident. It is only the hard work. It is only the hard work. Many times we don't even know the hard work put by somebody. Like they say, midnight oil, burning the midnight oil. English में एक proverb है, burning the midnight oil. What does it mean? सारे लोग सो रहे थे, एक आदमी बैठकर पूरा रात भर पढ़ रहा था. मैं ये नहीं कहूंगा रात भर पढ़ना चाहिए, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, बट my only thing point is, बाकी लोग सो रहे थे, एक आदमी अपने आप को तैयारी कर रहा था. आपने देखा होगा मिल्खा सिंह, बाग मिल्खा बाग. सारे लोग सो रहे हैं, ये नंगे पैर जाके ट्रैक में अपने आप को बार बार दौड़ के देख रहे हैं, सो दैट जब मैं ओलंपिक में मैं जाऊंगा तो. एंड रिमेंबर, मिल्खा सिंह साहब इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं थे, but he was not bothered because he knew his job is not to learn English, his job is to run. तो मुझे अपने आप इस फील्ड के लिए तैयारी करना है, तो उन्होंने तैयारी किया है. पिक्चर में भी है, whatever they have portrayed in the picture may not be 100% true, but it is a truth that when others were resting, he was working, he was practicing. So it is only hard work which will put you up above the others. And as I said in the beginning, intelligent hard work, have a good target, know yourself, know your strength and weaknesses. SWOT test एक होता है, strength, weakness, opportunities and threats. एक management में test होता है, SWOT. Forget about OT, but your strength and weaknesses you must know. When I got the result, तो मैंने अपने मदर को फोन किया. I was in Delhi. तो my mother said, अरे आपको तो IAS मिलेगा. मैंने कहा ठीक है अम्मा, अच्छा है. She said, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपको तो IAS मिलना ही चाहिए. Because for my mother, I was the best candidate. Because I was her son. तो इसलिए the affection hides her view. But you must know your strength and your weakness. Then only you can come up in this exam or in any walk of life. So I stop here. I will leave the session open to questions and answers. Chat box में यदि आपने भेजा है, I'm sure Mr. Ray or Suriksha ji, they will help me. And again, I would say, just let me finish. Just because I have passed in this exam, just because I'm an IPS officer, please don't think that whatever I say is the truth. It is not the final. Please carry on. Thank you so much, sir, for the great advice and also guidance. So there is a particular common questions. I think most of the aspirants they are always having in their mind, both for the beginners as well as for the aspirants who have been preparing for, let's say, 1 year or 2 years. One thing is that how to motivate themselves.
because when I also interact with the students, those who are beginner, they are completely new to this field, so they do not know, or they do not get that particular fire, I would say, to pursue it for a long period of time, because civil service is not a 1 month or 2 month, it's a long term, like a 1 year somebody has to prepare. At the same time, those who are also preparing since a 1 year or 2 year, who have given at least 1 or 2 attempts, sometimes they also feel themselves demotivated or a little bit of low. So this is a basic common question which maximum of the aspirants they often ask me. In fact, even yesterday, the result was announced. Definitely, there were students who qualified, but there are also students who could not make the final list, and they gave me a call, and they were a couple of students were crying. Then somehow I have to make them calm and say that this is not the life. This is just a part of life. So, sir, with your permissions and with your sir guidance, if you would like to address that how one person, be it a beginner or maybe an experienced in terms of study, how the person would motivate for a long period of time. This is a very good question. I'm sure many of you will have this question in your mind. See, without motivation, you cannot achieve anything. As I said, 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, 10 लाख बच्चे लिखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, उसमें से 10,000 आते हैं मेंस में, उन 10,000 में 1800 या 1700 पास होते हैं इंटरव्यू में, उसमें से जो टॉप मोस्ट 100 या 120 IAS बनते हैं, देन 60-70 foreign service, then another 120 or 150 Indian police service and other services. Motivation, it has two parts. First thing is it should come from within. तो आप अपने आप को एक प्रॉमिस करिए. महात्मा गांधी जी ने क्या किया? He was in South Africa. He came to India. I'm sure all of us have seen the picture. He was always wearing Western clothes. He was traveling throughout the country. When he saw the agony of the people, लोग इतने जो है गरीब थे, भूखे मर रहे थे, नंगे पैर थे, छोटे बच्चों को दूध नहीं था, खाने पीने का सामान नहीं था, तो he took a pledge, he took a vow, मैं इस कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाऊंगा. तो motivation is something, I would say most of it should come from within. मैं मदर टेरेसा के बारे में पढ़ रहा था. She was a Christian nun. दार्जिलिंग ट्रेन में जा रही थी, दार्जिलिंग जा रही थी ट्रेन में. उस समय उनके मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था, कोलकाता में इतने सारे लोग लेप्रेसी पेशेंट है, इतने सारे बच्चे अनाथ है, माँ बाप नहीं है, इतने सारे लोग मरने के लिए, मतलब टू डाई विद डिग्निटी के साथ मरने के लिए भी जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंगल एक इंडिविजुअल हूं, मैं क्या करूंगी. Then she took a pledge, she took a vow, मैं यूगोस्लेविया के थी मदर टेरेसा, मैं वहां का नागरिकता सिटीजनशिप छोड़ दूंगी. I will come and settle down in Kolkata. I will start Sisters of Charity. बाद में missionaries of charity हो गए, MC. आपके उड़ीसा में भी है, उनके कॉन्वेंट्स होंगे. So most of it should come from within. Number one. Number two, the rest of the motivation comes from outside world, like your mentors, your parents, your teachers, your seniors. I totally agree with you. Motivation को एक level में maintain करके रखना, it is very difficult. It is very difficult. It is very difficult. So अच्छे विचार मन में रखिएगा, अच्छे चीजों को सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग का एक हैबिट बनाइए, पॉजिटिव थिंकिंग का एक हैबिट बनाइए. एंड अगेन, एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, हैव अ प्लान बी. प्लान बी जरूर रखिएगा. रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता. इवन इफ समथिंग गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आउट ऑफ योर कंट्रोल. गाड़ी में आप चला रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया, 70-80 किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, तो इमीडिएटली योर ब्रेन शुड वर्क.
मैं कैसे इस गाड़ी को स्लो डाउन करूंगा विदाउट कॉजिंग एन एक्सीडेंट. तो ऑलवेज थिंक ऑफ द फ्यूचर, positive thinking, read very good books. There are many books, literature available. कम से कम एक दिन में 20 मिनट से 30 मिनट जो इस प्रकार का अच्छे विचार का जो लिटरेचर है, बुक्स है या जो टॉक्स है, उसको सुनने का आप रिजर्व करके रखिएगा. मिनिमम ऑफ 20 minutes or 30 minutes. Keep it for you. Keep it for you. No studies, nothing. But listen to something very good. Listen to good music. जैसे जो ब्रह्म कुमारी का जो बहन है, उसमें एक बहन बार बार जो सोशल मीडिया में उनके आते, बहुत अच्छे लेक्चर्स है. शी गिव्स वेरी गुड लेक्चर्स इन फ्लुएंट हिंदी, ऑल्सो इन इंग्लिश. तो इस प्रकार का आप रखिएगा. There are many positive thinking books, and I'm sure with your good seniors, parents, teachers, and the outside world. Negative thinking बिल्कुल मत रखिएगा. Negative thinking रखने का कोई जरूरत नहीं. So this is the only advice which I would give, because बाजार में मोटिवेशन नहीं मिलता है खरीदने के लिए. आप मैं 10 किलो ला के सबको 1-1 किलो बांटू. It should come from within, and keep the motivation level high always, which may not be possible, very easy to say, बहुत आसान है बोलना, but then you have to do it yourself. Thank you, sir, for the wonderful explanations. So one of the common questions, especially keeping in the view of the students of Odisha, and I'm sure that many students who are currently present, they are also from remote part of this particular state, and where they are not exposed to the world. They might not be in the English medium schools. And typically what happens, English or communication in English becomes a major challenge. And due to which many students, they do not even dare to think about the civil services, because they think it is a part of the English only, and those who are very smart and outspoken, and those who have been into different cities, who can communicate fluent English, they only sit for the exam and they only qualify. And that is also another reason why it makes the confidence level of the students a little bit low. So, sir, if any advice from your side for especially to those aspirants who are thinking that English is a lacuna, any advice, sir, that will be great. देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर इंटरेक्शन मैंने कहा भी था, कमांड ओवर इंग्लिश बोथ स्पोकन एंड रिटन इज वेरी गुड, इज वेरी यूजफुल. इट विल हेल्प यू टू कम अप not only in civil services, also in other walks of life. But then somebody not knowing English is not an impediment. All the exams are conducted in your mother tongue also. You have the option of choosing the language. You need not be a good spokesperson in English. Not for everybody. Like, this should not hold you back. आप अंग्रेजी में अच्छा वक्ता नहीं है, जिस कारण आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने का, या मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मैं क्या करूं, वो बहुत अच्छा बोलता है, मैं उस टाइप का नहीं बोल पाता हूं अंग्रेजी में. एक मिनिमम लेवल का स्पोकन इंग्लिश तो होना ही चाहिए. जैसे ग्रेजुएट है, इस एग्जाम का जो बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, somebody who has done graduation even from a rural university, rural college, or not from the district headquarters, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना इंग्लिश तो आना चाहिए. So you try to listen to good speeches टीवी में, then ऑडियो में, रेडियो आजकल बहुत कम हो गया, टीवी में, and also on your mobile phones, so that जो vocabulary जो बोलते हैं, vocabulary, जिस सिचुएशन में कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करना है. There are many umpteen number of sites on internet जो आपके अंग्रेजी को अच्छे वो करने का. श्रीदेवी जी का एक पिक्चर भी हम लोगों को याद आता है, जो इंग्लिश नहीं जानती थी लेकिन इंग्लिश सिखाती थी. तो नॉट नोइंग इंग्लिश इज नॉट एन इम्पेडिमेंट. आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, वो आपको एक स्पीड ब्रेकर नहीं है. नंबर 1,
ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ. जो बेसिक मिनिमम कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड रिटन इंग्लिश होना चाहिए. बट आपका इंग्लिश में यदि कोई कमी है, उसको आप अपने सब्जेक्ट में एक कदम आगे रहिए. आप अपने सब्जेक्ट में, लाइक योर मदर टंग में भी हिंदी और उड़िया और तेलुगु. सो सब्जेक्ट से यदि आप तेलुगु में लिख रहे हैं, उड़िया में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, उसमें बाकी लोगों से आगे रहिए. हु इज स्टॉपिंग यू? कौन आके आपको हाथ पकड़ रहा है? भाई मैं उड़िया भी नहीं जानता हूँ, इंग्लिश भी नहीं जानता हूँ. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए. दिस इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग, नो योरसेल्फ. आप किन किन एरिया में वीक है, किन किन एरिया में एवरेज है, किन किन एरियाज में सब्जेक्ट्स में यू आर गुड और वेरी गुड. ये अपने आप को पहले असेस करके देखिए. ओवरनाइट कोई अपने पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकता. ओवरनाइट अपना इंग्लिश स्पोकन या रिटन चेंज नहीं कर सकता. नॉट ओवरनाइट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इट इज पॉसिबल. बट आपका इंग्लिश यदि उतना अच्छा नहीं है, कमांड नहीं है, ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ. बट आपके सब्जेक्ट में आप बाकी लोगों से आगे रहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है. वन क्वेश्चन विच हैज बीन कम अप, आई विल टेक द लिबर्टी मिस्टर रे. वो Yes, sir. कोचिंग इज इट मैंडेटरी एंड नॉट, ये सबके मन में भी आता है, लोग पूछते भी है. साहब क्या ऐसा है क्या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन किए हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, नामी गिरामी, जो लाखों में पैसा लेते हैं, जिनका बड़ा बड़ा एड आता है टीवी में, हर चौराहे पे तिराहे पे नाम लिख के नीचे IAS लिखे रहता है, क्या मैं इन इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करूं तब मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा या सिविल सर्विस पास करूंगा? सी, इट इज नॉट प्री कंडीशन. आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके ही पास करेंगे या करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा, कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनिवार्य नहीं है. बट इन टुडेज टाइम आप देखिएगा, कंपटीशन इज वेरी टफ. कंपटीशन इज वेरी टफ, नंबर वन. नंबर टू, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो अच्छी, सबसे अच्छी जो पॉजिटिव चीज जो मैंने देखा, I keep on interacting with many students in across the country. सारे रीडिंग मटेरियल को आपको कंसाइज रूप में एक साथ एक जगह में करके आपके सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है. दिस इज द बेस्ट थिंग, हेल्प फॉर यू. यू नीड नॉट रन हियर एंड देयर. इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है. आप मुझे ये किताब चाहिए, मैं इधर से 4 पन्ना ले लूं, उधर जाके लाइब्रेरी में मैं रेफर करूं, वो जरूरत नहीं पड़ती है. ऑफ कोर्स यू हैव एक्सेस टू गूगल. इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव इंटरनेट इन योर फिंगरप्रिंट्स. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये फायदा है. नंबर वन, मटेरियल इज रेडी, इट इज ऑन द टेबल, इट इज गिवन टू यू, सप्लाई टू यू. दो दे चार्ज फीस जरूर लेते हैं, अपना जो भी काम करते हैं उसके लिए लेते हैं, बट आपको स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. सेकेंड जो चीज जो मैंने देखा, यू कम अक्रॉस लाइक माइंडेड पीपल. जैसे आपके कॉलेज में, आपके विलेज में, आपके सिटी में हो सकता है एक आदमी यहाँ पे है, एक कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है विद एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, दूसरा कैंडिडेट 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के आगे है, आपके उनसे कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है. बट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ प्लेस वेयर यू कम टुगेदर. So you have a buddy feeling. You have a buddy feeling. मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया हूं, मेरे बगल में राम सिंह साहब है, उन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है. सो कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासेस के अलावा हम दोनों इंटरेक्ट करते हैं. वी इंटरेक्ट विद ईच अदर. अरे भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. अच्छा ये किताब आपने लिया है, डिड यू रीड दिस एसे, आप मुझे ये दे दो, मैं ये दे रहा हूँ. सो लाइक माइंडेड पीपल रहेंगे, इट इज अ वेरी गुड हेल्प टू यू. ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक फायदा है. बिकॉज ऑफकोर्स अब तो ऑनलाइन धीरे धीरे कम हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन. यू कम अक्रॉस कैंडिडेट्स हु आर ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेटफॉर्म, आपके साथ उसी प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, तो आप उनके साथ अपने आप को बहुत इजीली, आराम से जोड़ सकते हैं. तो दिस इज वन गुड थिंग इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. द थर्ड जो मैंने देखा है, आई एम श्योर दोस हु आर पास्ट एंड दोस हु आर preparing also you'll agree with me, जो इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यूज जो देते हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज एज आई सेड, मेरे मदर के लिए मैं ही सबसे अच्छा था.
आई वॉज नॉट रैंक 1, बट मेरे मदर आज भी बोलते अरे आपको तो रैंक 1 आना चाहिए था, इतना मेरे बेटा इतना अच्छा है, इतना इंटेलिजेंट है, इतने दिन से पढ़ाई कर रहा था. बट इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट दे हैव दिस मॉक इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट भी है, मॉक इंटरव्यू भी है. मॉक इंटरव्यू को पूरा रिकॉर्ड करके आपके सामने प्ले करके स्क्रीन में दिखाते. So there are many good advantages in coaching institutes, but for somebody who is not able to have access, who is not able to, who does not have the resources, जो money I am talking about, plain terms में money, या आप उस प्लेस से भुवनेश्वर से बाहर है, 500 किलोमीटर बाहर है, एक अलग कमरा लेके भुवनेश्वर में आप रह नहीं पाएंगे, ज्यादा कॉस्टली होगा. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट is not a must. There are so many candidates. आप जिनका इंटरव्यू जो पढ़ेंगे, there are many candidates who have done their self study. तो सेल्फ स्टडी में फिर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. जैसे इंटरनेट है, बुक्स है, नाउ बुक्स यू कैन इवन ऑर्डर फॉर बुक्स. कोई पर्टिकुलर किताब मेरे पास नहीं है तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं. इट इज डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप. इंटरनेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल. अगेन देयर आर मेनी इंटरनेट साइट्स विच गिव यू फ्री कोचिंग. ये भी मैं बता देता हूँ, फ्री कोचिंग का भी देयर आर मेनी इंटरनेट साइट्स, so you can have access to it. There are many people, even individuals, बहुत सारे इंडिविजुअल भी इंटरनेट में आपको टिप्स देते हैं, कोचिंग देते हैं. तो दिस इज माय आंसर. एक क्वेश्चन जो पूछा गया है रिगार्डिंग वर्किंग कैंडिडेट्स, क्या कोई भी कैंडिडेट जो जॉब में नहीं है 24/7 यानी फुल टाइम तैयारी कर रहा है, क्या वही सक्सेसफुल होगा, या कैन एनीबडी अटेम्प्ट दिस एग्जाम अलोंग विद देयर जॉब्स? दोनों है, दोनों कर सकते हैं. अगेन आई वुड से हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. इफ समबडी इज हैविंग अ जॉब, आपका जॉब में है, जॉब आप छोड़ नहीं सकते, जॉब भी करना, एट द सेम टाइम प्रिपरेशन भी करना है. हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, गिव जस्टिस टू योर जॉब and also to your preparation, and have a timetable. टाइम एक होना चाहिए. सुबह 3 घंटे का, बीच में लंच का जो गैप मिलेगा उसमें मैं रिवाइज करूंगा. शाम को खेलने का टाइम कम कर दूंगा, शाम को 2 घंटे का, 3 घंटे का. या मैं जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स स्टडीइंग व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन. बस में तो बहुत मुश्किल है, बट ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मी, मेनी स्टूडेंट्स दे राइट और इवन दे रीड ड्यूरिंग ट्रैवल टाइम, उसको वेस्ट ना करके. तो यदि कोई वर्किंग कैंडिडेट है, यू कैन वेरी वेल डू इट, बट मेंस एग्जाम के कम से कम 1 या 2 महीने पहले इट विल बी बेटर इफ यू हैव अ ब्रेक. आप अपने जॉब से ब्रेक लेके करेंगे तो इट विल बी गुड. अदरवाइज इट मे इवन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, टाइमली खाना नहीं खा पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो दैट मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ. बट देयर इज नथिंग टू से वर्किंग कैंडिडेट पास नहीं हो सकते हैं या सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं फुल टाइम वही सक्सेसफुल होते हैं. ऐसे देयर इज नथिंग टू से. यस प्लीज. Thank you, sir. I think commonly when I gathered all of the questions, these are the common questions, and a couple of students have also asked about how to study efficiently. I think I would just like to mention that sir has already answered in quite like techniques. For example, he has shown the newspaper, how to make it a interconnection between the current affairs topic and the general studies topic. So already in the sessions things are covered. And if anybody wants to ask any different question other than what sir has covered, if you have any other questions in your mind, please feel free to ask. Otherwise, I think it's already late, and I'm really thankful to sir that sir has given an extended time. Anybody having any kind of other than questions? How to prepare for newspaper? Okay. Any other questions? All right.
I think, देखिए yes, sir. मिस्टर रे, I'll just Please, intervene. sir. Optional के बारे में पूछा गया था. Please, sir. In English they say one man's meat is another man's poison. One man's meat is another man's poison. मेरा एक बैचमेट था. I am from South India. You know South India में, especially Tamil Nadu, Kerala में फूड जो फूड है जो अच्छा माना जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल में खाना जो बनाते हैं उसको डेलिकेसी, बहुत अच्छा फूड माना जाता है, डेलिकेसी माना जाता है, स्पेशली इन तमिलनाडु एंड केरला. माय फ्रेंड वाज फ्रॉम पंजाब. ही वाज अलॉटेड टू केरला कैडर. ही वेंट टू केरला फॉर हिज ट्रेनिंग. व्हेन वी मेट अगेन इन द IAS एकेडमी मसूरी, जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैंने पूछा, भैया हाउ वाज केरला? तो ही टोल्ड मी, प्रकाश सब कुछ अच्छा है, गॉड्स ओन कंट्री, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत सारे जगह है घूमने के लिए, पीपल आर वेरी फ्रेंडली. बट एक चीज मुझे खराब लगा है. क्या खराब लगा आपको? वो ये बोल रहा था, साहब खाना जो है हेयर ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कोकोनट ऑयल हेयर ऑयल है, बाल में लगाते हैं कोकोनट ऑयल, बट साउथ में उसको खाने में बनाते हैं. कोकोनट ऑयल में जो बना हुआ खाना डेलिकेसी माना जाता है. आई एम टेलिंग दिस बिकॉज ऑप्शनल, प्लीज डोंट थिंक देयर इज अ गोल्डन ऑप्शनल. कोई गोल्डन ऑप्शनल है? एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी जिसने भी लिया है वो पास हो जाएंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसे नहीं है. तो माय ओनली टेक रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, आई सॉ ऑन द स्क्रीन मेनी वर आस्किंग ऑप्शनल का हम कैसे चूज करें. माय टेक वुड बी, माय सजेशन वुड बी, please choose that optional which you have studied in the college level. At least अभी तो 2 ऑप्शनल तो है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है. तो कॉलेज लेवल पे आपने जो स्टडी किया है वो यदि आप ऑप्शनल चूज करेंगे, इट विल बी बेटर. बिकॉज इफ यू आर अ ग्रेजुएट, 3 साल आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़े होंगे. इफ यू आर अ मेडिकल ग्रेजुएट, देन 4 साल 5 साल MBBS आप पढ़े होंगे. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे. ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर because you have already studied that subject for 3 years, 4 years, or 5 years at the maximum. First thing. Second thing, you will have a lot of books already आपके पास होगा. So, but again I would say here also there are many candidates engineering background के हैं, they have chosen a humanities subject as optional. Public administration choose किए, sociology choose किए, and anthropology choose किए, geography choose किए, literature choose kiye. There are many who have become successful, who have succeeded with the Hindi literature, Tamil literature, Telugu literature, Malayalam literature. So there is no golden optional as such. Is optional lenge to 100% success guaranteed hai. There is no golden optional. You exercise your thinking part. You can get your support from your academy or mentor or your college professor or even your seniors. Then choose a good option. I think you'll succeed. My email address is with Mr. Shankar. Those who could not get their doubts cleared or those who could not get their questions answered, आप जो है मेरे email address ले लीजिएगा, and you can send a mail to me. I'll try my best to answer to the extent possible. Not that I'll be able to answer all your questions, not that I'll be able to nullify all your doubts, but I'll try my best. तो मेरा email address शंकर साहब आप जिनको चाहिए आप शेयर कर दीजिएगा. Don't worry about disturbing me. Just send an email. I'll be more than happy to help you out in case you have any questions and in case I'm able to give the satisfactory answer. Over to you, Mr. Shankar. Yes, sir. All the aspirants, I would like to say one thing, that whosoever is having any kind of additional questions, as sir has already intimated, please reach out to us. We will definitely forward all of your questions to sir. In the end, one thing I would like to mention, that sir has mentioned one interesting point, that regarding building a structure. When he mentioned about we have to remove the unwanted materials in order to get into a proper shape.
So that is one of the wonderful lines said by sir. I think all of us, we have that quality inside us. At the same time, we also have a little bit of unwanted things. So all we need is to distract those unwanted things, to remove those unwanted things in order to make a success in our life, as well as successful in our dream and achieving our goal. I would like to take this moment to sincerely thank Shri Prakash sir for giving much extended time, and I'm extremely fortunate and humble, sir, that you accepted the invitation out of your busy schedule and you interacted with many students. I think it's almost more than an hour you interacted, and I'm sure that, sir, your guidance as well as your the path which you have given us today will take all of the aspirants into a new road, into the new right path in their life. And truly fortunate, sir. So from the organization, from the entire team, from all of the students, I'm sure that, sir, in future, if it is possible, we will also request in future to have your presence. But today's session it was wonderful. Your tips and the guidance and participations points, starting from the prelims, mains, interview, and there are many examples which you have given. Those are completely path-breaking and thought-provoking. So with this, sir, once again, sir, thank you so much for your accepting the invitation as well. Thank you so much, sir, for addressing the students. Thank you. From my side, I thank Mr. Shankar Ray, who was responsible for this session, and I feel happy that I could interact with you. It's always a pleasure to see the young faces and to interact with them. I hope and pray that all of you become successful, and God bless you. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir.